Rachna. I am privileged to introduce Government Senior Secondary School Dalaghat as a participant in the School Youth Parliament, a platform that empowers young minds to engage in democratic processes, develop leadership skills, and most important, addressing pressing societal issues. Through this experience, we aim to develop our critical thinking, public speaking, and problem-solving skills, ultimately emerging as a responsible and informed citizen. Thank you for giving me the opportunity, and I wish a productive and enriching experience in the School Youth Parliament. Honorable members, Honorable Speaker, Honorable members, a very good afternoon to all of you, and I welcome you all to the Government Senior Secondary School, Dalaghat Youth Parliament session, and I hope this session will be a very fruitful one. We begin today's session with the oath taking or affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Miss Ashika, who stand elected from Varanasi constituency of Uttar Pradesh. Miss Ashika, please. Would you like to take oath or affirmation? I would like to take oath, sir. In which language? In Sanskrit. अहम कुमारी आशिका यह युवा संसद सदस्य लोकसभाया सदस्य निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य प्रतिज्ञा गृह्णामि यत् अहं विधिना स्थापिता भारतस्य संविधानस्य प्रति श्रद्धा निष्ठा सुनिश्यामि। देशस्य प्रभुसत्ता एकता च निर्यास्यामि पदे स्व कर्तव्यस्य श्रद्धापूर्वकं निर्वहनं करिष्यामि। धन्यवादः। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House the cloudburst in Himachal Pradesh and Uttarakhand during the past few days. The incidents of cloudburst and flash floods amid heavy rains have badly hit normal life across the state, resulting in loss of lives and property. As we all knew, a catastrophic cloudburst recently struck in Himachal Pradesh, causing widespread devastation and destroying different areas including Samej village. Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते हफ्ते अचानक आई बाढ़ ने पूरे भारत में कहर बरसाया। घरों से लेकर सड़कों तक नुकसान हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में पर्यटक फंस गए। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से कई लोगों की मौत जो एक दुखद घटना है। इस दौरान भारतीय सेना व सहायक दलों ने बचाव अभियान से लगभग 5000 से अधिक जानें बचाई। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं अपने और अपने सदन की ओर से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए और शोक संतप्त परिवारों के लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Honorable Leader of Opposition, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल और उत्तराखंड की इन प्राकृतिक आपदाओं ने हमें गहरे सदमे और दुख में डाल दिया है। इन सुंदर वादियों में आई विनाशकारी घटनाओं ने न जाने कितने जीवन छीन लिए और कई परिवारों को असहनीय पीड़ा दी है। प्रकृति का यह खेल हमारे दिलों में एक अनकहा दर्द छोड़ गया है।
हम उन सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन विनाशकारी घटनाओं में हमें छोड़कर चले गए। महोदया, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस समय अराजकता का माहौल है। वहां पर चल रहे सांप्रदायिक झगड़ों की वजह से कई हिंदुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में उनके घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हमला किया गया। इस सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवा बैठे अपने हिंदू भाइयों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महोदय। Now, the House may stand in the silence for a while to express our deep sorrow. Honorable Prime Minister to introduce the new ministers. Respected ma'am, it is my pleasure to introduce to you all my new ministers. Ms. Bhumika, Minister of Irrigation. And Ms. Mamta, State Minister of Communication. Now, let us begin with the question hour. Question number 1, not 1, Ms. Mitali. Honorable Speaker, ma'am, I would like to ask question from the Minister of Education to you. First of all, India is a developing country and the youth plays a very important role in the development of any country. So, will the Minister of Education be pleased to state the efforts being made by the government for development of any country? So, will the Minister of Education be pleased to state the efforts being made by the government for developing the new future of youth through Education. Ms. Muskan, please. Honorable Speaker, ma'am, thank you. I can see the concern raised by the opposition regarding brain drain and chairperson said it. It has only country's economy. And I'd like to remind everyone that the brain drain is a global issue and India is not the exception. The country does make efforts to stop this by promoting the Make in India initiative and promoting the privatization. And mark my words that it is not far when we will experience a reverse brain drain, when our school profession will return home due to improved conditions which will lead to a real brain drain. Thank you, Speaker, ma'am. Supplementary question, Mr. Harshit. Honorable Speaker, ma'am, according to reports, close to 9 lakhs Indians have given up the citizenship since 2015. In addition, 23,000 millionaires have left the country since 2014. India has processed a migration of talented students from abroad. So, will the Minister of Education be pleased to state the steps that have been taken by the government to transform the brain drain to brain reservoir and to make our country a house of knowledge? Thank you, ma'am. Honorable Minister, please. Honorable Speaker, ma'am, thank you. I can see, keeping in the view the broader aspects of the holistic learning for the children of the age group 3 to 18 years old, which cover 15 years of the children's development. Keeping this in mind, various initiatives and forms have been introduced in higher education, like issuing of the university, grant, commissions and regulations. We are also giving guidelines for the multiple entries and exit in the academic programs. Thank you, Speaker. शिक्षा पर बड़ी बड़ी बातें, पर क्या नहीं लगता हम आज भी उसी ठर्रे पर है? All white in new water. महोदया, मैं अपने पक्षी साथियों को आश्वस्त करना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ
paper manner. The price of fuel in India is directly related to the price of crude oil. In international market, 80%, ma'am, 80% of raw fuel is important, which means that a global rise in the price directly translates to a similar price. In 2020 to 2021, the price of crude oil crashed in Saudi Arabia. The major producers and damped their production by 10 lakh barrels per day in an effort to cut their losses and bring down the stability back then. Now, however, the war in Ukraine has led to a disruption in global supply chain, resulting in a global price, corresponding price hike here. However, that certainly does not mean government is not doing anything. We have cut the excess duty on petrol and diesel rupees 8 and 6 per litre, respectively, as part of our efforts to minimize life on the common man. In fact, I think that I can allow myself to say we have handled the situation pretty well. Of course, cooperation from the state is also needed to further bring down the Supplementary question, Ms. Pooja. Honorable Speaker, ma'am, I would like to know whether the government has taken any steps regarding the switching of petroleum from the non-GST list to GST list. If so, what could we expect on the gross national income? Thank you, Speaker, ma'am. Honorable Minister for Finance, Ms. Yachna. Honorable Speaker, ma'am, while I cannot deny the beneficial effect of bringing fuel under the GST ember, I would like to point out that it would also result in a very significant loss of revenue of rupees 2 lakh crore from the treasury of both the center and the state. A burden that would inevitably pass on the common people. As such, now we have no plan to bring petrol and diesel under the ambit of GST, at least for the present. Thank you, Speaker, ma'am. Next question, question number 1, not 3, Ms. Bharti. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of External Affairs be pleased to state whether the government has planned or taken any measures to identify unregistered individuals in neighboring countries? If so, what are the details? Honorable Minister for External Affairs, Ms. Meenakshi, please. Honorable Speaker, ma'am, the power to identify and deport foreign nationals staying illegally in our country have been delegated to the state government and union territory administrations. All states are therefore advised to sensitize all the law enforcement agencies for taking from steps in identifying these illegal immigrants without any delay. We know that deportation and detection such of illegal immigrants for state is the continuous process. Thank you, Speaker, ma'am. Speaker, ma'am, there is a serious breach of privilege by the members of the ruling party. Days before, a serious and confidential issue relating of the foreign policy of India towards its neighboring countries was discussed and was leaked into media, now has become a chaotic debate. When the side puts forth any of their governmental project or increment in GDP, let them got to know about the rules, regulations, norms, discipline, decorum of the parliament, and let them not make the people ashamed of whom they choose to be their representatives. Harshit, have you given notice of it earlier? Yes, ma'am, I have already given notice of it at 10 a.m. this morning. It will be examined and you will come to know about it. Honorable members, I have an announcement to make on my own behalf of the angel members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Kawaguchi, Japanese Parliament and other ordinary members to the Japanese parliamentary delegation who are on a visit to India as an honored guest. 皆さん、私、王冠儀少子、黒木、荒井高等、荒井高等。Now, let us take up the calling attention motion. I request Ms. Vishali and Mr. Naman to call the attention of the Minister of Health and Family Welfare. Ms. Vishali, please.
Honorable Ma'am, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of the urgent public importance and request that the Minister may make a statement thereon the situation arising out of food adulteration in the country and the steps taken by the government in this regard. Thank you, Speaker Ma'am. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Ms. Ashika, please. Honorable Speaker Madam, the government is fully conscious about the injuries caused by the consumption of adulterated food by the humans. The Food Safety Act 2006 consolidated the laws related to the food and established the food safety for the consumption of food for the humans. As per the Act, penalties or punishment shall be given to those who sell the food not of nature. So, to check fruits, vegetables, dairy products, etc., online platform has been developed by FSSAI by the name of Dutch. The government has also revised the punishment for milk adulteration and fine of ₹10 lakh as per the Food Safety Act 2019. Advertisement is a serious offence and strict action shall be taken in these cases. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to begin with the quote of Swami Vivekananda, which says, "Brave, bold man and woman, these are what we want. What we want is vigor in the blood strength, in the nerves of iron muscles and nerves of steel. Avoid all this, avoid all mystery. Unquote these qualities and pass by him to construct a strong nation will be a far-fetched idea. If we do not go up to menace of food adulteration, if we leave food adulteration unchecked, we are bound to lose lives more than any war. Ma'am, if this continues, we will not have any frontline medicine, no frontline medicine to treat basic diseases like typhoid, like malaria and other common fevers. The latest one reported in the country a new disease called IBS, that is inflammatory bowel syndrome. Thank you, Speaker Ma'am, for giving me the opportunity to speak. आदरणीय महोदय, दूध हो, चाय हो, फल हो या सब्जी, सब चीज में मिलावट का बोलबाला है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धो, आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा सभी। अगर आहार शुद्ध होगा तो हमारे देश की आधे से ज्यादा रोग संबंधी समस्या तो यूं ही हल हो जाएगी। आज देश का ये हाल है, यहाँ भी मिलावट और वहाँ भी मिलावट, यहाँ तक कि खाने में भी मिलावट। जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या, हर चीज में मिलावट है। फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मांस मच्छी को ताजा रखने के लिए फॉर्मेलिन का, अरे इस जमाने में तो जहर को भी नहीं छोड़ा है। चूहों को चूहे मारने वाली दवाई दावत जैसी लगती है। मुझे किसी की कही हुई बात याद आ रही है कि हमारे देश में शरीर से निकलने वाले पदार्थों की जांच करने के लिए गली मोहल्लों में प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ तक कि घर घर में सैंपल लेने की सुविधाएं उपलब्ध है। पर मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों से यह सवाल करना चाहूंगा कि वह अपने क्षेत्र में किन्हीं ज्यादा नहीं महोदय, केवल और केवल किन्हीं 4 प्रयोगशालाओं के नाम बिना कहीं देखे बता सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। ये तो क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। इसका यही कारण है कि हमारे देश में प्रयोगशालाओं की संख्या इतनी कम है। अगर हमारे देश में कोई सक्षम खाद्य प्रयोगशाला ही नहीं है तो हम इस मिलावटीपन जैसी बड़ी समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे? अब मैं बात करना चाहूंगा एक्सपोर्ट क्वालिटी के बारे में कि कंपनियां खराब क्वालिटी के पदार्थ क्यों बेचती है। इसका एक ही कारण संभव है, संभव नहीं, इसका केवल और केवल एक ही कारण है, सख्त नियमों का अभाव। जनता का ये पूरा हक बनता है कि वे बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें और इस हक को लोगों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार की है। मिलावट खोलो, मिलावट खोलो, मिलावट खोलो। Speaker ma'am, within the last 3 months, 9 causes of death due to the consumption of adulterated food items have been reported in the country. प्रधानमंत्री जी जब ऐसा ही हाल होंगे तो शासन करेंगे,
सिफत तो सी ही रह जावांगे, प्रजा थोड़ी ना रवेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, फूड अडल्ट्रेशन के खिलाफ हमने कार्यवाही की है, इसलिए यह नए मामलों के लिए रुक गई है। अगर कार्यवाही ना की होती तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता था। खाद्य सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने उचित समय पर एक उचित प्रभावी दल का आयोजन किया है। मेरे प्यारे विपक्षी साथी ने खाद्य पदार्थ की एक्सपोर्ट क्वालिटी के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। व्यवहार है, और क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? यहाँ बात खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने की है। महोदया, लगता है कि आप गणित में बहुत माहिर हैं, परंतु मुझे यह पता नहीं चल पा रहा कि करोड़ों लोगों के बीच में केवल मैं ही जिंदा कैसे रह सकता हूँ। उतना भी भाग्यशाली नहीं हूँ मैं, परंतु कम से कम आपने मेरी लंबी उम्र की आशा तो की, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। Secretary General to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Ma'am, I lay on the table of the House the Bill of Regulation of Sports Bodies 2024 as passed by the Upper Chamber. Now, the question is that leave be granted to introduce the bill further to introduce one nation, one election. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who are against will please say noes. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. Leave is granted. Honorable Speaker, ma'am, first of all, I want to congratulate to you and through you for successful election for the largest ever election in history. More than 968 million people. Out of a population, 1.4 million people were eligible to vote. And I also want to thank the Election Commission for successful commitment of this election. But ma'am, in this election, the government used money, which is actually the hard-earned money of the people. Is also unnecessarily spent to frequent election. Honorable ma'am, the public is also troubled by the frequent election. Sometimes Lok Sabha election, lack of assembly election, and sometimes panchayat election. Honorable ma'am, one nation, one election will not only change the nature of election in the country, but will also save unnecessary spending in the country. With this bill, all
जी को इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन 2024 को इस सदन में प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत एक वर्ष से जनसभाओं व देशवासियों से मिले पत्रों से मुझे इस विषय पर फीडबैक प्राप्त हुई है। मुझसे पूर्व पक्ष एवं विपक्ष में इसमें भिन्न बातें रखी गई। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं कि आज हम खड़े हैं तो 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन से। जनता जनार्दन सर्वोपरि है तथा बिना कुछ कहे वह अपने विचारों को इन चुनावों के माध्यम से अपना मत रखती है, जिसे स्वीकार करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे हमारी सरकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से पूछता हूं कि आखिर एक वर्ष के अंदर करवाए जाने वाले चुनावों को एक साथ क्यों नहीं करवाया जा सकता? यदि इन चुनावों को एक साथ करवाया जाए तो मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का हजारों करोड़ रुपया धन बच सकता है। क्या इसमें कोई बुराई है? मेरा माननीय कानून एवं न्याय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस सदन में प्राप्त सभी सुझावों को उचित स्थान प्रदान किया जाए ताकि हम इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन को पारित करने के साक्षी बन सके।